Good morning, guys. Today is 23rd of April and it's Friday. So what we have done is we have positioned ourselves on a 14350 straddle in Nifty account, and we have positioned ourselves in 31500 straddle in Bank Nifty account. But it looks like there is a lot of strength in both Bank Nifty as well as Nifty. Reliance भी एक तरह का फर्स्ट 5 मिनट्स में स्ट्रेंथ दिखाया है, and Nifty IT after gapping down by almost 0.7%, it's now heading higher. तो बैंक निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स में the volumes are not that great, but it is kind of heading higher. So the idea will be, if बैंक निफ्टी breaches this day's high, yesterday's high को अगर टेक आउट कर लेता है, then we might be looking at closing this position with whatever profits or whatever loss. Will be taking that loss and will be closing out this position. And the same thing, अगर निफ्टी भी अगर 420 के लेवल्स को अगर ब्रीच कर देता है, then also will be closing this level. Till then there won't be any adjustments to this, क्योंकि the 14350 put has even now has a lot of meat in it. मतलब अभी भी ये 14350 put जो है ये सस्टेन कर सकता है हमें. तो that's why what we're gonna do is we're gonna wait out, थोड़ा मतलब होल्ड करता है इसको, because yesterday's closing price will act as a resistance, and ये जो point है ये भी I feel that it should also act as a resistance. So if the resistance doesn't hold, then we might have to come out. And Bank Nifty looks like Bank Nifty is kind of taking resistance at yesterday's close. अगर वहां से resistance आ जाता है, then fine. अगर इस कैंडल के जो हाई है, फिर से if this high gets taken out, then we might be coming out of the position. Nifty suddenly एक rejection candle बनाया near the yesterday's close, तो I'm thinking that should act as a good resistance. अगर विक्स की बात करते हैं तो विक्स has slightly reduced, इतना नहीं, slightly reduced, but the IVs of the individual options, especially the call options, are skyrocketing. तो कॉल के जो ये IVs है काफी ज्यादा बढ़ रहा है, and इतना ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए था. See, basically the puts are not at all decaying, and whatever the movement is there, the movement is sheerly because of the call movement. Puts नीचे जब मार्केट आ रहा है, though these puts are not spiking up, but at the same time when the market is going high, the puts are not decaying as well. Market found supply at the higher levels, both Nifty and Bank Nifty, and in fact Bank Nifty broke the day's low. So but Nifty is kind of holding the day's low, but at the same time Nifty has a CPR to protect it. As of now the premiums are kind of spiking up now, because we had almost seen 15k of profits here, but suddenly half of the profits have been wiped off. That's because the premiums are spiking up. So alright guys, the time is 9:50 and we have collected close to 10 points of DK. We had almost collected around 12-13 points of DK, but because of this candle, this was kind of a concerning candle, and this was a huge red candle. एक मिनट में almost 25 points move कर दिया था, but this dip is kind of getting bought in, and if this dip continues and if the day's low gets breached, so we might have to look at coming out of the straddle. But Bank Nifty is exactly where we have positioned ourselves, 31500 straddle, and the market is kind of hovering around 31500. So if Bank Nifty takes the day's low again, I'll show you guys. अगर बैंक निफ्टी फिर से नीचे आके ये डेज लो को अगर ब्रीच कर देता है, then we might have to look at exiting the straddle. And at the same time अगर निफ्टी भी अगर डेज लो को ब्रीच कर देता है, if Nifty breaches the day's low now, then we will exit the straddle, but we'll look at some sort of a stable strike price, so that we'll get a proper range to manage our straddles. तो इससे तो exit हो जाएंगे, but that doesn't mean that we'll be ending our day today, because weekend DK मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा आना चाहिए, because the news has almost been over. ठीक है, आजकल मतलब जो एक हफ्ते पहले जो न्यूज आ रहा था, सेम न्यूज अभी भी आ रहा है, राइट? सेम कोरोना, सेम 2 लाख के ऊपर केसेस, सेम ऑक्सीजन का शॉर्टेज है, सेम बेड्स का शॉर्टेज है, सेम डॉक्टर्स का शॉर्टेज है. सो नाउ द मार्केट हैज ऑलरेडी प्राइस्ड इन दैट. एक हफ्ते से पहले दैट न्यूज वाज काइंड ऑफ नॉवेल मतलब नया है, मतलब कुछ नया न्यूज मार्केट को आया, एंड द मार्केट्स रिएक्टेड. बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट्स डोंट रिएक्ट टू द सेम काइंड ऑफ न्यूज, बिकॉज एक बार नया न्यूज आ गया तो मार्केट इज सो स्मार्ट दैट इट फैक्टर्स इन व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द से लेट्स नेक्स्ट so and so number of days. So after that the markets won't factor in the same, after that the markets won't react the same way that they used to react for the first time. So
Because of that, I am expecting a good weekend DK, and even the premiums are good. 360 rupees we have collected together on the straddle. So we're going to wait out. We're going to wait out till either the day's high is breached or day's low is breached, and that's the point where we'll be coming out of the straddle and we might be entering a new straddle. What we have done is we have completely pulled ourselves out of the positions. So क्या हुआ है? Bank Nifty is particularly looking extremely strong. So Bank Nifty account से भी like we have pulled ourselves out. We have collected around 25 points of DK in Bank Nifty, and Nifty में भी we have come out in even in Nifty. That is because क्यों हमने बाहर आए? It's because alright, यहाँ पे देखो Reliance was coming down and Bank Nifty was going up, and at the same time HDFC was going up and Nifty IT was kind of halting. But यहाँ पे क्या सीन है? Reliance को एक सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे. This is a CPR. यहाँ से Reliance शॉर्ट अप हो सकता है, and Bank Nifty futures has already taken out the day's high. तो Bank Nifty फिर से ऊपर स्पाइक अप हो सकता है. Nifty IT has been consolidating. अगर यहाँ पे भी फिर से एक बास्केट बाइंग आ जाएगा and HDFC में भी एक बास्केट बाइंग आ जाएगा, तो Nifty is going to shoot up like anything. Immediately Nifty spike up हो जाएगा and we don't want to be get caught in that kind of thing. अभी देखिए मैं देखते देखते Bank Nifty is already kind of taking out the day's high. तो we'll be waiting for some stability, and stability जैसे आएगा वहां पे we'll again form a straddle and we'll play with that. Alright guys, what we did is we entered a 14,400 straddle after that. वो position close करने के बाद 14,400 straddle हमने enter किए. But because the prices were spiking way too much, we came out of it with just a minor 0.40 paisa loss. And now what we have done is we are sitting on a 14,450 straddle. The call premiums are spiking way too high. So what we are going to do is we are going to wait till 14,500. So this is just an IV spike. So 14,500 तक wait करेंगे. If 14,500 is also taken out, then we might have to look at taking a loss and coming out. And at the same time, अगर 14,400 this level, ये जो 14,410 level है, so if 14,410 is breached, अगर कोई टिक पे 14,410 दिखता है, then also we are going to come out. That is because the reason is 1410 पे भी हम क्यों वापस आना चाहिए? See, if the trend has to continue or if the trend has to at least halt, मतलब इस ऊपर के रेंज पे अगर halt करेगा, so market अगर for example if market has to go something like this, अब अभी के बाद ऐसे जाना चाहिए, then it has to respect the breakout level. ये जो level था, it's an important breakout level. Yesterday's high भी है, तो एक बार टेस्ट किया and then it has taken out that level. So this level should be ideally respected. तो अगर वो level breach कर देता है, then our hypothesis will be wrong, and that's why we might have to look at coming out of the straddle. So as of now, we'll be sitting with 14,450 straddle. The upside is 14,500 levels, and the downside is 14,410 levels. So any further updates will be updated. हाँ, बैंक निफ्टी में भी मैं 31,700 के straddle पे बैठा था, and we had to take a 1,000 around 900 rupees loss in that. Bank Nifty was super bullish and the call premiums were just shooting through the roof. So we took a minor loss, and currently the Bank Nifty account is around 1.2k and Nifty account is around 20k. Guys, ये जो candle form हुआ, during that candle like we came out of all our positions, तो सारे position खत्म हो गया है. So we have booked around 19.9, 20k मान लो, 20k यहाँ पे बुक किया है, and another 1k यहाँ पे बुक किया है. So 21k for the day. अभी मेरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी नहीं चल रहा है. I've been trading using my phone's internet, so which is not that great, and because of which I try to not take any further positions now, because एक sudden selling आई है. We'll wait for a few minutes and then we might think about re-entering the positions. So as of now 14,400 looks like a good support, because यहाँ पे जो है ये जो पैटर्न फॉर्म किया था, this pattern, this and this pattern, so this should also act as a good resistance, 14,380 levels. So and that's the hypothesis as of now. तो अभी तो फिलहाल एंटर करने के लिए I'm not sure like if I have to enter now. The premiums are like very attractive premiums. But देखेंगे, थोड़ा देखेंगे, and if the cascade continues, because it's 12:20 and the European markets are also kind of taking hints from
इंडियन मार्केट्स इंडिया में जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच इवन द यूरोपियन मार्केट्स आर काइंड ऑफ फैक्टरिंग इन दैट। एंड बैंक निफ्टी में ये रिट्रेसमेंट आना जरूरी था। तो लेट्स सी लाइक व्हाट द मार्केट डज एट दिस लेवल्स। तो ये लेवल पे क्या करेगा देखते हैं, बिकॉज काफी लोग यहाँ पे जो मार्केट को शॉर्ट किए रहेंगे, सो फॉर देम दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट। एंड ऑल्सो देयर हैव बीन सो मेनी पीपल हु मिस्ड दिस रैली एट दिस पॉइंट, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम ऑल्सो टू एंटर। So there will be some sort of an impulsive buying, either in terms of buyback by the short sellers or the new longs by the long entrants. Okay, all right, guys. What we have done is I have again taken a 14,400 straddle, जो यहाँ पे एक अच्छा रेंज बनाया था। एंड अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। As long as this triangle pattern is not broken and as long as this range is not broken, कौन सा रेंज? ये जो रेंज है, ये जो रेंज, ठीक है, यहाँ पे जो ये जो बॉटम पार्ट है, दिस शुड एक्ट एज अ सपोर्ट, एंड यहाँ पे जो यस्टरडेज हाई है, दिस शुड अगेन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रीच किया बट इट डिडंट सस्टेन अबव इट। यूजुअली अगर ब्रेकआउट टाइप होना चाहिए, हाँ, इफ द ब्रेकआउट हैड टू बी सस्टेन्ड, तो यहां पे जैसे ऊपर गया, इट हैड टू टेक द सपोर्ट हियर एंड इट हैड टू मेक अ हायर हाई यहां पे, बट वो नहीं बनाया, इनफैक्ट वापस आ गया। सो डेफिनेटली दिस इज काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस, बिकॉज यहां पे जो ऊपर जो गया, इट इज टू ट्रैप द बुल्स। ये जो बुल ट्रैप था, इज व्हाट आई एम थिंकिंग, करेक्ट? तो यहां पे जो ब्रेकआउट देख के जो लोग गए हुए रहेंगे, तो उनका सबका स्टॉप लॉस अभी हिट हो गया, तो दे विल बी थिंकिंग ट्वाइस टू अगेन री एंटर टुवर्ड्स द अपसाइड। तो दिस विल अगेन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एंड एट द सेम टाइम यहां पे जो दो स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद इमीडिएट जो बाइंग आ गया, सो इट मींस दैट दिस कैंडल का जो स्ट्रेंथ है, दिस कैंडल का स्ट्रेंथ हैज बीन कंप्लीटली अब्सॉर्ब। ये जो सेलिंग प्रेशर था, इस सेलिंग प्रेशर को कंप्लीटली अब्सॉर्ब किया गया है। सो दिस शुड ऑल्सो एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। तो सिंस आई गॉट अ गुड रेंज टू प्ले विथ, 14,430 टुवर्ड्स द अपसाइड एंड 13,370 टुवर्ड्स द डाउनसाइड। तो ऊपर 30 पॉइंट और नीचे 30 पॉइंट, जब तक मार्केट इन 30 पॉइंट के रेंज के अंदर रहेगा, विल बी स्टेइंग विद दिस स्ट्रैडल। एंड स्ट्रैडल ऑलरेडी इट हैज गिवन अराउंड 1 point, just 1 point of decay. There has been absolutely no decay. तो पूरे दिन डीके नहीं हो रहा है। तो दैट टाइम ऑल्सो एक्सप्लेनिंग टू यू गाइस। तो दिस स्ट्रैडल हमने शॉर्ट किया है 173 प्लस 167, विच इज 340 रुपीज पे हमने शॉर्ट किया है। एंड इवन करेंटली इट इज प्रेटी मच देयर ओनली, लाइक 1 or 2 पॉइंट्स इधर उधर भटक रहा है। सो मेरे हिसाब से दिस स्ट्रैडल शुड नॉट बी वर्थ मोर देन 300 रुपीज एट द एंड ऑफ द डे। तो काफी ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट करने को है। दैट्स व्हाई सिंस द रिस्क रिवॉर्ड इज इन माय फेवर, I've been sitting on this, but बोल नहीं सकते बिकॉज लास्ट फ्राइडे एंड लास्ट ट्यूसडे दोनों टाइम आफ्टरनून डीके बिल्कुल जीरो था, बिकॉज these options were pricing in a lot of overnight risk. तो इसलिए these options didn't decay at all. तो अगर we'll wait for another let's say another half an hour, in half an hour if we don't get a decay of let's say 4 to 5 points, then we might exit this because decay नहीं realize होने वाला है and we'll be just exposing ourselves to delta movements. Okay, all right guys, ये जो फॉर्मेट, ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा था, उसी कैंडल पे हमने एग्जिट कर चुके हैं। We exited our straddle at 173 and 163. एक 4 points डीके हमने कलेक्ट किया है and this is 25k in this account and another 1200 in this account. तो around 26k आज बनाया है and there has been a sudden selling. तो अगर इस टाइप ऑफ कैंडल अगर फॉर्म करता है then I don't think this support is also gonna hold. तो I'm not expecting this support is going to hold and suddenly हमने बाहर आ चुके हैं. Alright, and since the decay is not happening at all, so I'm not gonna enter anymore now. This is the end of my trading session, guys. So I've made around 25k in this account and another 1.2k in this account, so 26k for the day. So I'll see you guys in the next video.